समय नेक्स्ट पढ़िया कौन बोडे प्लॉट व्हाट इज बोडे प्लॉट डेफिनेशन as per 2 मार्क क्या बोडे प्लॉट this plot is one type of your method or technique one type of method or technique to determine the stability of a system. So Bode plot is a graphical representation. It is a graphical representation of transfer function. Graphical representation of transfer function for determining stability of a control system. Bode plot is a graphical representation of the transfer function to check the stability of a control system. It is a graphical representation or methodology. So in Bode plot, there is two separate plots. These are separate plot in a single frequency response, single line single response rate, two plot dida plot kara single response rate dida plot hochi gote hochi tamara phase angle tamara kon achi gote hochi tamara one is plot of the logarithm of the magnitude, one is magnitude and the second one is the phase angle. Today magnitude ta oda angle da magnitude ta angle da magnitude of angle. So Bode plot is consist of two plots. One is your logarithm of magnitude logarithm करावो and कौन phase angle बुझियोला definition दे मार के रास्ते लिख पर आराम से. Next we will see about the about different procedure for plotting grammar procedure कौन है देखिए or steps. What are the steps? This is very important. These steps are very important. A step जागो तमिल दे properly बुझी जीवो आराम से तमे Bode plot draw करी पारिबो. And it is very easy to draw Bode plot with the help of a semi-lig graph and calculator. Steps है मन रखा ना. Step one होची identify the corner frequency. Identify the corner frequency. Identify the corner frequency. Identify the corner frequency. Let me give you a simple example. Corner frequency बाहर करें बहुत easy. It is very easy. The general form of the transfer function is in time domain. Or you can say time constant. GS. In general format for a Bode plot होची general format होची K by 1 plus ST1 1 plus ST2 like this. General form ना तुम already जानी चाहिए. K into 1 minus STA जो हम already बोला में रूट लोकस भी पढ़े रूट लोकस नहीं पढ़े थे ऑलरेडी नहीं ऑलरेडी पढ़े थे मन नहीं yes sir and it तले कौन थी बा s to the power m थी बा s to the power m थी बा type पढ़े लाड़ पढ़े थे नहीं type 1 type 0 type 1 type 2 and
error constant रे पड़े error constant रे. So this is a standard form. Okay, standard form. A standard form मन रखे किसी दरकार नहीं, but that is standard form. For example, there is a question: GS equal to 1000 divided by 1 plus 0.1 s into 1 plus 0.001 s. So here I will explain you how to calculate this corner frequency. Corner frequency को हमें ओमेगा रे रिप्रेजेंट करि पारिया. So corner frequency कौन? What is corner frequency? Corner frequency omega equal to 1 by time constant, 1 by t. It's very simple. It is very simple. Frequency is what? Reciprocal of time. So this is one type of frequency. So omega equal to 1 by t. Where t is this is a t. T. Already standard format to देखि पारियो. This is t1. This is t2. So for omega 1, it is 1 by t1. That is 0.1. कितने अवॉइड आपको? 1 by 0.1 रो वैल्यू कितने? 10 sir. 10. And omega रे यूनिट तमे जानि छ ऑलरेडी कहि छ मु माने आकुर भी माने एथलेटिक तमे इलेक्ट्रिकल प्ला जानि छ. ओमेगा होछ कोन? रेडियन पर सेकंड. Radian per second. Similarly, omega 2 is 1 by t2, that is 0.001 equal to कितना से 1,000 radian per second. So this is a simple step. First step is to identify the corner frequency. It is very easy method to identify the corner frequency. Clear? This is a step 1. Step 1 is identify the corner frequency. Step 2. The step 2 is step 2. Step 1 बुझिएला? Yes sir. The step 2 is draw the asymptotic magnitude plot. Which is बुझा पड़ना चाहिए नहीं? देखो the slope will change at each corner frequency. Very important points. Very important point. The slope will change at each corner frequency. The slope will change at each corner frequency. Slope ta change habo each corner frequency re slope change habo. For example, we have 3 corner frequency: omega 1, omega 2, and omega 2. So the slope will change. The slope will change at each corner frequency. Omega 1 re slope jaha thibo, omega 2 re slope will change up to omega 2. The slope remains same. After omega 2, the slope will change, whatever it is. Okay, slope कौन change होती मुझे ना कहीं भी. The slope will change. Next, after this is omega 3, up to omega 2 to omega 3, up to from omega 2 to up to omega 3, from omega 2 up to omega 3, the slope remains same. After omega 3, the slope will again change. Slope will again something different change. बुझिए ना? कौन कोई सी लाइन ना? The slope will change at each corner frequency by slope. Okay, by plus 20 dB plus 20 dB. dB होची gain टाका में dB को आज decibel पे measure करा. 20 dB per decade. What is decade? Decade माने 10 times को decade को.
So for example, 0.1 रो decade will be 1. 10 times. R decade कौन अब 10. 10 रो decade कितना 100. 100 रो decade 1000. These are called decade. Decade means 10 times. 10 गुना 10 times होती decade. 10 times होती decade. So से कौन कहला ना the slope will change at each corner frequency by plus 20 dB per decade for 0 0 कोन पोल कोन जानि चल आगु पाइछ for 0 by plus 20 dB per decade for 0 and minus 20 dB per decade for pole. Minus 20 dB per decade for pole. Although a process ta just मन रखो problem रे कहले तुम बुझी जबो एडा ए जो सेंटेंस ता से कहछि कोन एडा. For now just remember this thing, okay? Plus 20 dB per decade for 0. Minus 20 dB per decade for pole. For a, these are for simple pole and simple zero. Simple pole and simple zero. Simple pole zero अच्छी में ना कौन थे परे? कौन थे परे? अरे simple yes. Complex. For complex pole and zero. For complex it is. For complex conjugate pole and zero, the slope will change by minus and plus 40 dB per decade. For complex pole, it is minus 20 dB. For complex zero, it is plus 40 dB. So 20 goes 40. Simple thing, very simple. For simple pole zero, it is plus 20 dB per decade. For complex zero, again मैं कोई दे भूल भाल कौन कर दी थी बताए plus 20 dB per decade for simple zero. For complex zero, it is plus 40 dB per decade. For 40 dB per decade, plus 40 dB per decade, plus 40 dB per decade, and minus 40 dB per decade. dB per decade for complex pole, and plus 40 dB per decade for complex zero. Clear? Again more repeat कर देखो. First step कहला से corner frequency काढिया पई बहुत easy 1 by omega equal to 1 by t कर देबो. Second point से कहला तमो कोन कहला ना draw the magnitude plot draw करे उसे कहछि, and the slope will change at every corner frequency. Slope will change at every corner frequency. For zero, it is plus 20 dB per decade. For pole, it is minus 20 dB per decade. For simple zero pole, and similarly for complex, it is a plus or minus 40 dB per decade. Clear? So moving to our step number 3. Step number 3 रे तीन point कौन? For type 0 it is different. For type 0 it is different. For type 1 it is also different. For type 2 it is also different. So step 3 ए स्टेप जगह जते भल से बुझिबो तमरो कोन ड्रा करिया बहुत इजी हो. ड्रा करियाटा किछि कष्ट ना. But remember these steps are very important. Exam रे क्वेश्चन स्टेप्स भी पचारि पारे. स्टेप जा भी लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे. व्हाट आर द स्टेप्स इजीली हम तमे 5 टा 6 टा 7 8 टा जा भी स्टेप्स जो मेथड अछि ठीक है मन रखि पळेबो. So for type 0 draw a line up to
first corner frequency having 0 dB per decay. Clear? कौन कहला सी देखो? For type 0, for type 0, for type 0, draw for type 0 for type 0 draw 0 dB per decay up to first corner frequency, up to first corner frequency. Corner frequency को CW लिख दो चा, corner frequency में कौन लिख ले? CF लिख दो, corner frequency. Clear? For type 0, draw 0 dB per decay up to first corner frequency. So question रे देखली तमे जान दबो whether it is type 0 or type 1 or type 2. जदि तमे जानि परनो type 0 1 2 बोली रे मु ऑलरेडी पढै छी कोहले उडा क्लास में पढै छी से वीडियो जाई देखियो ग्रुप रे छाड़ छी. Next होची for type 2 sorry for type 1 for type 1 for type 1 for type 1 draw a line having slope minus 20 dB per decay. Draw minus 20 dB per decay up to the corner frequency omega equal to k. Up to the corner frequency omega equal to k. Next type 2 for type 2 draw for type 2 draw a line having minus 40 dB per decay up to omega equal to root over k. Up to omega equal to root over k. Let me revise all these 3 steps. First step होची corner frequency. Very easy. 1 by t, 1 by t1, 1 by similarly 1 by t2, 1 by 3 t3 एवढा. And second step होची plus or minus 20 dB per decay for simple 0 and full, and minus 40 or plus or minus 40 dB per decay for complex pole 0. And the third step is for type 0 draw 0 dB per decay up to first corner frequency, and for type 1 draw minus 20 dB per decay up to k omega equal to k, and for type 2 draw minus 40 dB per decay up to omega equal to root over k. And step number 2 रे से कौन कहला important point गुडे कहला कौन कहला ना the slope will change at each corner frequency. That is very important line. The slope will change up to at each corner frequency. Next होची step number 4 होची draw a line up to second corner frequency by adding the slope of next pole 0. Okay, मैं इधर कहीं calculation करा देना पड़ेगा. Calculate the phase angle and a corner frequency. Okay. I think next step important. Next step वो the problem रही बुझ पारी. Other steps है problem रही बुझी पारी वो. Other problem रही बुझ पारी वो. बुझी वाला. So कौन करीबा ग्राफ करकर मते तम पाखा semi-lig ग्राफ अच्छी नहीं. Semi-lig graph paper and calculator is required.
semi-lig graph a green color का ठीक राइट एवढा था जी ना Yes, sir. बड़ा बड़ा ग्राफ का फुल पेज का दरकार फुल पेज का नहीं एडी पेज का कौन ये भी छोटा चावल बड़ा का this will work as a setup पर पड़ेगा ओके क्वेश्चन नंबर नहीं सॉल्व करिया पे सो क्वेश्चन होची GS sketch or plot a Bode plot for the transfer function GS equal to this and also calculate a phase margin gain margin and stability of the system. So GS equal to 1000 divided by 1 plus 0.1 S into 1 plus 0.001 S. Clear? So first step is to find out the corner frequency. So omega 1 equal to 1 by 0.1 equal to 10 radian per second, and omega 2 is 1 by 0.001 equal to 1,000 radian per second. This is radian per second. First step is completed. So next thing is, tell me what is the type of the system. Type. Zero. Yes, for type 0. What is the process in the step number 2? Type 0 type of draw 0 dB. yes 0 dB 0 per dB decay up to first kernel frequency, clear? Up to कौन गला first kernel frequency. First होची draw the asymptotic magnitude plot कही तो तुम first magnitude टा बाहर करिए. What is the magnitude? Magnitude होची 20 log k. 20 log k, where k is this is k. So 20 log 1000. Calculator and enter kara. What is the answer? 20 log 1000. Step 2. Yes, step 2. 20 log 1000. 60 dB. So magnitude would go dB. 60 dB as well. Okay, 60 dB. 60 dB. And for type 0, we have to draw a line with 0 dB per decay up to first kernel frequency. First kernel frequency is 10 radian per second. First kernel frequency 10 radian per second. Clear? So here in this plot, plot रे कौन करा बोना दीडा में ऑलरेडी डेफिनेशन रे कहि छी कोन जे सिंगल पेज रे दीडा प्लॉट करा गोटे एंगल उडे ओडे मैग्नीट्यूड गोटे एंगल उडे मैग्नीट्यूड माने गोटे मैग्नीट्यूड ओडे एंगल. सो मैग्नीट्यूड हमें नै जो एडा ठीक अछि. मैग्नीट्यूड नै जो ऊपरटा हमें मैग्नीट्यूड ड्रा करबा और तळ लाइन रे हमें फेज को ड्रा करिया चेष्टा करबा. पेंसिल रे पके देबा.
Clear? मोटा मु कर दउची काई ना देखा दियो रे ना स्क्रीन रे देखा दियो मोटा कर दउची यस करेक्ट है यस ठीक है फर्स्ट थिंग तुम ये प्लॉट विषय जाना दरकार है जो सेमी लॉग ग्राफ विषय जाना दरकार सेमी लॉग ग्राफ रे एड़ा लिखा था 1 2 3 4 5 to 10 1 2 लिखा था नंबर सो हमें जो नंबरिंग करवा आम जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी केते अछि ओमेगा 1 डा 10 रेडियन पर सेकंड आछि 10 रेडियन पर सेकंड आछि सो एटा हम यदि 0 नबा दिस इज 0 दिस इज 1 एटा 2 तापरे एटा से देखि परियो से लिखि दै छी पॉइंट ला दे छी सो एटा 3 ए लाइन डा हा एडी तो जणा पड़ने 3 ऊपर देखि परियो ला ऊपर देखि परियो ऊपर 3 4 5 मोडे काम करछ ऊपर लागि जाछ So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Next कौन होगा? Decade. Okay. 10 times. 10 times तमर सब changes है जो 10 times में ना कौन होता है? इड़ा वाला decade. इड़ा वाला decade. ये जगह changes हो. 10 पर कौन next 20. 20, 30, 40, 50 up to last इड़ा 100. Next 100 जगह 200. 200, 300, 400, एवढा लास्ट काची 1000. Next पण 1, 2000, 3000, 4000 and up to this is 10,000. बुझेला ना हम कहले सर एग्जाम रे मिनी पेपर देथुबे कि सर पे इने पेपर ओटे धकिनी घरी पळा एग्जाम देबेनी कहले तमे निजे कर पारे क्या एडा तम भाषा बुझितियो हेल्पफुल तम बीटेक रे भी हेल्पफुल हो बीटेक रे भी एडा नाही तम छाड़ कंप्यूटर सिस्टम बीटेक रे और कष्ट हो क्लियर अच्छा सर ओके सो तमु कोन कहला से केते आंसर केते असला 60 dB असला 60 dB असला 60 dB असला सो ए जे लाइन जाउ ठीक है 1 2 3 4 और द छोटा कुछ ए गैप जा सेम गैप रही है ना एटिकल अलग छोटा बड़ा देखा मतलब बट सेम रही साइड 60 को लाला करी पारी ओडे ठीक है केतरा लाइन हला 10 6 लाइन है 10 10 नहीं पारियो ठीक है 10 20 30 40 50 60 से कौन कहछि draw a line 0 dB per decay. What is 0 dB per decay? This line is a 0 dB per decay. Straight line is 0 dB per decay. The straight line is a 0 dB per decay. बुझला से कौन कहछि 60 dB रे ए जगह रे कौन करियो 0 dB per decay माने कोन कोड स्टार्ट कले 0 रु डिकेड केते हबो 10 जाय डिकेड केते हबो 10 जाय so, and first corner frequency is also 10 so up to 10 clear so this line is 0 dB per decay सला ना नहीं यस सर सो तम से इम्पोर्टेंट पॉइंट उडे कहितला तम से कोन ना उडे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहितला जे
at each corner frequency, at each corner frequency, at each corner frequency, the slope will change. Slope will change. How much it will change? How much it will change depending upon the pole and zero. So हमें को जगह पहुँचले ओमेगा 1 जगह पहुँचले. This is omega 1. A line टा होची omega line टा and y axis टा होची magnitude टा. Y axis टा होची तमरा magnitude decibel है ना. हाँ. Corner frequency टा कोडे. Corner frequency टा कोडा पच्चा चोरी. एड़ा कौन हम कर ले? What are these things? माने सर ग्राफ है सर. हाँ, obviously graph record account. Corner first corner frequency 10 रे second corner frequency कैसे? 0 to 10 जे interval नहीं 0 10 interval किसी नहीं. 0 10 interval किसी नहीं. Corner frequency पहले उड़ा point 10 रे उड़ा अच्छी आवड़े कुछ 1000 अच्छी. So 10 रे first. ताले 1000 next ए जो third number 80 होता है और next corner frequency. 80 corner frequency omega 2.